दिल्ली स्कूल ऑफ एजुकेशन के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज 2020 के बारे में बात करने के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन के लिए फ्रेम किया गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 that will lead a major transformation, a major change in the whole education scenario of India, with a vision, an education system that contribute to an equitable and vibrant knowledge society by providing high quality educational facilities for all. So it is a very much needed that every student, every prospective teachers, educators, in-service teachers, and all stakeholders of society should have an awareness regarding National Education Policy 2020. What is the core values? What are the basic premises on which this National Education Policy is framed? Who contributed and how it will impact us? Because education is a pivotal force that change or shape a society. It is the only thing by which an individual change himself, his status, his mental ability, and grow intellectually, mentally. And it leads to a productive society. It develops human, and this developed human able to contribute in different spheres of society. That's why we should have to have a knowledge about National Education Policy. That's why we came here to tell you what are the main areas of new education policies. Before this new education policies, we have a lots of educational commissions who have contributed immensely, by which we are able to grow further and make a knowledgeable society. सबसे पहले अगर बात करें तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49 आया, और जिस तरह से आप नाम को देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने जो रिकमेंडेशंस दिए वो मोस्टली हायर एजुकेशन से रिलेटेड था। देन सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया 1952 और 53 में, जिनके मेजर रिकमेंडेशन से हमारी एक आधारशिला बनी भारत की एजुकेशन की। देन एजुकेशन कमीशन 1964-66 जिसने पूरे एजुकेशन सिस्टम को एक बेहतर रूप देने में, एक मूलभूत ढांचा खड़ा करने में एजुकेशन का, जिसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आगे बढ़ाने में मदद किया, वह DS कोठारी साहब द्वारा के चेयरमैनशिप में, उनकी अध्यक्षता में बनी एजुकेशन कमीशन थी। उसके बाद नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जो फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑन एजुकेशन आया 1968 में। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, जो इंदिरा गांधी के समय में 1976 में हुआ, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का संज्ञा भी दिया जाता है, और उसने एजुकेशन को कंकरेंट समवर्ती सूची में लाके खड़ा किया। स्टेट लिस्ट से समवर्ती सूची में आने के बाद राज्य और केंद्र सरकार मिलकर के उस पर कानून बना सकती है, और इस तरह से एक मेजर चेंज आया एजुकेशन में। उसके बाद नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन
एनपीई 1986 राजीव गांधी के समय में आया और एनपीई 1986 को मॉडिफाई किया गया इन 1992 में, जिसे प्रोग्राम ऑफ एक्शन के रूप में जाना गया। अगेन इन 27 मई 2016 TSR सुब्रमण्यम कमिटी ने अपने रिपोर्ट प्रस्तुत किया और उस रिपोर्ट के आधार पर पुनः आप देखेंगे 31 मई 2019 को डॉक्टर के कस्तूरीरंगन के चेयरमैनशिप में कमिटी ने रिपोर्ट दिया और इसी कमिटी के रिपोर्ट के अनुसार हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को फ्रेम किया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 NEP 2020 के नाम से जिसे जाना जाता है, यूनियन कैबिनेट ने उसे 29 जुलाई 2020 को अप्रूवल दिया। It outlines the vision of India as a new education system, creating and crafting a new education system by which we are able to become a Vishwaguru. The new policy replaces the previous National Policy on Education 1986. The policy aims to transform India's education system by 2040. 2040 आते आते पूरे एजुकेशन सिस्टम को रिवैम्प करने और एक नया रूप देने के लिए ये पॉलिसी फ्रेम किया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए। सारे स्टेक होल्डर्स जिनकी शिक्षा में कहीं भी सहयोग की संभावना है, उनसे मार्गदर्शन लिया गया, उनसे सुझाव लिए गए। ऑनलाइन मोड से 26/1/2015 से लेकर 31/10/2015 तक ऑनलाइन मोड में www.mygov.in पर सजेशन लिए गए। लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायत, 66 ब्लॉक्स, 6000 अर्बन लोकल बॉडीज, 676 डिस्ट्रिक्ट्स से कंसल्टेशन किया गया मई से लेकर अक्टूबर 2015 के बीच में। और इसके ड्राफ्ट समरीज को, सारांश को 22 लैंग्वेजेस और ऑडियो बुक्स के रूप में लोगों के सामने लाया गया। एजुकेशनल डायलॉग स्थापित किया गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आंध्र प्रदेश, केरला, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटका और उड़ीसा जैसे राज्यों से। स्पेशल मीटिंग हुई कैब की 21/9/2019 को और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी शिक्षा के लिए जो HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए है, उनके सामने ये प्रस्तुत किया गया 7/11/2019 को। और अंतिम परिणति के रूप में आप देखेंगे तो कब 29 जुलाई 2020 को यूनियन कैबिनेट ने से अप्रूवल दे दिया। विजन क्या है, किस विजन पर यह एजुकेशन पॉलिसी फ्रेम किया गया है? यह फ्रेम किया गया है कि एक ऐसे शैक्षणिक पद्धति को आगाज करना जिसमें समता हो और जो एक वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी, ज्ञानवर्धक समाज की परिकल्पना कर सके, जिसमें हाई क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल हो, सबके लिए एजुकेशन की व्यवस्था हो। इस तरह का प्रोविजन करने की बात की गई है। डेवलप अ डीप सेंस ऑफ रेस्पेक्ट towards the fundamental rights, duties and constitutional values, bonding with one's country and conscious awareness of one's role and responsibility in changing world. This is the provision, this is the vision कि एक जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, जो हमारे संवैधानिक मूल्य है,
उन मूल्यों की रक्षा करना, अपने देश के प्रति प्यार डेवलप करना और एक अवेयरनेस, चेतना उसमें डेवलप हो, अपने रोल और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर के इस बदलते हुए दुनिया में ऐसे स्किल्स को डेवलप करना, ऐसे मूल्यों को बढ़ाना जिसके द्वारा वह मानव अधिकारों के प्रति उनकी कमिटमेंट बढ़े, वो सतत विकास की ओर उन्मुख हो सके समाज, और सार्वभौमिक भलाई की भावना उसमें डेवलप हो सके, जिससे कि वह वर्ल्ड सिटीजन बन सके, एक ग्लोबल सिटीजन के रूप में दुनिया में अपना योगदान स्थापित कर सके। स्टील स्किल्स, values and dispositions that support responsible commitment to human rights, sustainable development, and living and global well-being, and thereby reflecting a truly global citizen. So, if we want to be global power, we will have to change. We will have to equip ourselves according to the changing world scenario. We will have to develop our synergy, our collaboration. We will have to blend our education system with the new technology, with the traditional thoughts and wisdom. Then we will become a vibrant knowledge society. Otherwise, we will fail. So, we don't want to fail. We want to develop India as a growing, as a leading world power in terms of knowledge capacity, in terms of technological development, in advancement of capacities. Because we are a very young country, and that's why there is a need to tap the resources, tap the talents of our younger generation. So we framed this new education policy. If we talk about our key principles of new education policy, that is national education policy, before we going to expected outcomes, we must have to discuss about key principles. What are the key principles on which it is based? हाँ, इसके क्या मुख्य और मौलिक सिद्धांत है जिस पर हमारी शिक्षा नीति को बनाया गया है? Respect for diversity and local context. In all curriculum, pedagogy and policies, हमारे पाठ्यचर्या में, हमारे शिक्षण शास्त्र में और हमारे पॉलिसीज में विभिन्नता और स्थानीय संदर्भों को सम्मान दिया जाए. Equity and inclusion should be a principle. As the cornerstone of all educational decisions, there is equity and inclusion, samaveshan. More participation of the community, encouragement and facilitation for philanthropic, private and community participation. Because education cannot run in isolation. So there is a need of such participation of more and more people. It may be alumni, it may be the industrialists, private players, philanthropists, and other stakeholders who want to contribute in the area of education. They are welcomed in this policy framework. Now, another principle is the use of technology. This era is the era of technology. Due to COVID, we have seen we will have to go for online mode. That's why there is a need of
empower our teachers, teacher education institutions, or students for 21st century skills in teaching and learning, removing language barriers for Divyang students, and in educational planning and management, use of technology in assessment, in transaction of learning, as well as mitigating the gaps between haves and haves not. We should have to use the technological devices, technological skills among students. Emphasize on conceptual understanding. Next principle is संप्रत्य विकास और समझ विकसित हो. They don't rely on rote memorization and learning for exams. That is happening. Our students just learning only for the sake of getting marks. They don't want to develop their knowledge base. They are much concerned about their exams and how to get the marks. So now it will shift towards the conceptual development and development of understanding among students. This is the key principles. Unique capabilities, recognizing, identifying them in each student. What are their capabilities and capacities? Development of critical thinking and creativity. That is 21st century learning skills. Just they don't rely on rote memorization and reading or studying some few chapters and getting the marks. They should have to develop their critical mind setup, looking the different dimensions of the different objects, and by which they are able to innovate, devise new things. It may be sphere of teacher education, it may be in the classroom. Students should have to given the opportunity, give them think thorough. So we have to develop the pedagogy on the pattern by which they can develop their critical and creative thinking skills. And another principle is continuous review. Review of what? Sustained research and regular assessment by educational experts. The policies are working in the right direction or not. We have to track it. And these are the key principles of national education policy: respect for diversity and local context, equity and inclusion, community participation, use of technology, emphasize conceptual understanding and unique capabilities, creative thinking and creativity, continuous review. लोकल संदर्भों और भिन्नता को स्वीकार करना, समतामूलक और समावेशी शिक्षा, समुदाय की सहभागिता, तकनीकों का प्रयोग, संप्रत्य और समझ पर जोड़, अद्भुत और अद्वितीय जो क्षमताएं हैं उनको बढ़ावा देना, बच्चों की समालोचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन को बढ़ाना और सतत अवलोकन करते रहना। इस प्रिंसिपल्स के आधार पर और इस विजन के आधार पर यह नई शिक्षा नीति आधारित है। What are the key expected outcomes? कि key expected outcomes हम क्या चाहते हैं, what we want through this policy? तो उसमें सबसे पहले आता है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एक्सेस। शिक्षा की पहुंच सार्वभौमिक हो, सबके पास शिक्षा पहुंचे, एजुकेशन फॉर ऑल। फ्रॉम now it shift from ECCE to secondary. Before it हम पहली क्लास से सेकेंडरी क्लास तक जाते थे, लेकिन अब हमने
for children 3 to 6 years, access to free, safe, high quality early childhood care and education at Anganwadi, preschool and Valvatika. We will provide it. Ensure equity and inclusion. No one will deprived from getting the education in any sense. Include all. It may be deprived section, marginalized section, Divyang, CWSN, gifted, adult. So equity and inclusion should be ensured. Bringing back 2 crores out of school children. It is a target. We want to achieve it. Attaining sustainable development goal as SDG goals for retaining all children in school until completion of secondary education. 12वीं तक की पढ़ाई सबके लिए हो और ये जो हमारा गोल है, लक्ष्य है, उसको हम प्राप्त कर सके. Improve quality and achievement of learning outcomes. Fundamental literacy and numeracy. और 2025 तक ये फंडामेंटल लिटरेसी या न्यूमेरेसी को लाने की बात कही गई है. We should have to develop the 21st century skills in the learning, in teaching and assessment. जो UNO के द्वारा स्थापित 21st century skills है, learning skills, उन skills को कैसे डेवलप किया जाए, हम आगे इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. Effective governance in separation of powers and common norms should be for every schools or every higher educational institutions. And there is a big gap. There are so many talented persons, but they are not able to speak or don't able to understand in other language. So in this education policy, there is a great emphasis on development of multilingualism, trapping the talents of different languages, and language should not become a hindrance in the development of the students. So there is a great emphasis is given in language development, common standard for the public and private school education, and hold the implementation of new education policy that is envisioned as National Education Policy 2020. Implementation be jointly carried out by Ministry of HRD, Human Resource and Development, Women and Child Development, Health and Family Welfare, and Tribal Affairs. 4 ministries will involve in this direction, that is HRD, that is WCD, Women and Child Development, and Health and Family Welfare, HFW, and Tribal Affairs, TF. So these is a joint collaboration of these departments and ministries. Fundamental principles, we discussed about all these things, recognizing, identifying and fostering the unique capabilities of each student. हमें पहचान करना है, हमें इंगित करना है, हमें उनमें जो उनकी अद्भुत और अद्वितीय क्षमताएं हैं हर एक स्टूडेंट की. Every student is unique in their own sphere. Uniqueness in terms of dancing, uniqueness in terms of using communication skills, acting skills, or some have mathematical skills. They have multiple types of talents. According to Harvard Gardner, there are 9 types of intelligence. So different types of capabilities they may have. We have to trap it, we have to catch, we have to track it, we have to assess it, and then we have to foster the students about these skills. There should be flexibility
in terms of options, in terms of way they want to learn. So we have to mingle, we have to mix. There should not be a hard separation. So no hard separation is the envisioned in this new education policy. अब आर्ट्स और साइंस, करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, वोकेशनल और एकेडमिक स्ट्रीम्स में सेपरेशन को खत्म किया जाएगा, by which students have more options for opting the streams, professions, and developing their skills according to their own will. It is not forced by the other. It is their own choice where they want to go and where they want to lead the society. Multidisciplinary and holistic education, संपूर्ण शिक्षा, सर्वांगीण शिक्षा और बहु अनुशासनात्मक शिक्षा की ओर हम बढ़ेंगे. Emphasis on conceptual understanding, creativity and critical thinking, promotion of multilingualism and power of language in teaching and learning. Life skills such as communication, cooperation, teamwork and resilience should be included as a fundamental principles, is included in fundamental principle of new education policy. Focus on regular formative assessment for learning, to knowing the students, to changing the teaching learning pattern, methods on the basis of formative assessment. Extensive use of technology in teaching and learning in offline mode or online mode. We should have to develop use of technology, respect for diversity and respect for local context, full equity and inclusion, synergy in curriculum across all education, teacher and faculty as a heart of the learning process. So there should be more focus on teacher development courses, a light but tight regulatory framework to ensure integrity, transparency, and resource efficiency of the educational system through audit and public disclosure, while encouraging innovations and out-of-box ideas through autonomy, good governance, and empowerment. So, ensuring universal access to education for all, multiple pathways will be opted. Multiple pathways to learning, involving both formal and non-formal education modes. Build schools, promoting both government and non-governmental philanthropic organizations to build schools. Learning outcomes focus will be achieving desired and teaching outcomes at all levels. Bringing back dropouts to bring out children back to schools. Alternative centers should be developed. Alternative and innovative education centers will be developed. Peer tutoring suitable for all categories, business and personal presentation. So ensuring universal access to education for all is encouraged. Fundamental literacy and numeracy, urgent and necessary prerequisite of learning. It is a very much needed that there should be fundamental change is expected, because many of students may be considered as backward child. They are not able to read and write or understand the subject matters below their classes. They have lack of fundamental reading and writing or mathematical or numerical abilities. So there is a prerequisite कि हमें उनको पढ़ाना होगा और उनको जो बेसिक और बुनियादी
भाषागत क्षमताओं और अंगणितीय क्षमताओं को विकसित करना होगा, और इसके लिए मिशन मोड पर इसे स्टैब्लिश किया जाएगा, जिससे कि हम 2025 आते आते इसको अचीव कर सके। नेशनल मिशन ऑन फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी will be set up by the Ministry of Human Resource Development on priority basis, because अगर उसे बेसिक जानकारी नहीं है बच्चों को और हम केवल सिलेबस कराते रहते हैं तो उससे उनके कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में, समझ विकसित करने में मदद नहीं मिल पाता है। सो वी विल हैव टू फोकस ऑन दीज थिंग्स। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के रूप में आया है, मिनिमम क्वालिफिकेशन टीचिंग के लिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री कर दिया गया है। इसमें भी चेंजेस है। अ न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, आपको याद रखने की जरूरत है, NCFTE 2020-21 विल बी फॉर्मुलेटेड बाय NCTE, National Council of Teacher Education, in consultation with the NCERT. तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE 2021 को NCERT और नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन डेवलप करेगी कोलैबोरेट करके, और 2030 तक आते आते मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन टीचिंग के लिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स होगा। और जो सब स्टैंडर्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए स्ट्रिजेंट एक्शंस लिए जाएंगे, जिससे कि टीचर एजुकेशन में बेहतर हो सके, जिससे कि अच्छे टैलेंटेड और जिनमें टीचिंग एप्टीट्यूड, क्रिएटिविटी हो, जिनमें पेडागोजिकल इंटरेस्ट और इनोवेशंस हो, ऐसे टीचर टीचिंग में की ओर आए और टीचिंग प्रोफेशन अधिक वाइब्रेंट बन सके। इस पर इसमें बहुत अधिक फोकस किया गया है। अगर स्कूल एजुकेशन की बात करें तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, द फाउंडेशन फॉर लर्निंग के रूप में उसे, द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग के रूप में उसे, मूलभूत जहां नींव पड़ेगी, जहां बच्चों के अर्ली चाइल्ड, और इसमें बहुत बेहतर तरीके से जो पेडागोजिकल स्किल्स डेवलप, इनोवेटिव पेडागोजिकल स्किल्स जो वर्ल्ड क्लास रिसर्च ईसीसी के ऊपर हुआ है, उन पेडागोजिस को यहां लिया जाएगा। वो प्ले वे मेथड हो, स्टोरी टेलिंग मेथड्स हो, उस पर ज्यादा जो सेंसरी ट्रेनिंग्स हो, जो जिन पे आजे कहता है कि प्ले इज इंपॉर्टेंट एंड सेंसरी ट्रेनिंग इज वेरी मच इफ यू वांट टू डेवलप द चाइल्ड। अगर आप सिगमंड फ्राइड के डेफिनेशंस को देखते हैं तो सिगमंड फ्राइड कहता है कि अर्ली 5 ईयर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, कि शुरुआत के 5 वर्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। और हमारे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आया हुआ है उसमें भी इस बात को जोर दिया गया है कि हमें अर्ली चाइल्डहुड केयर पर ज्यादा काम करना होगा। अगर इरिक्सन जो सोशियो साइको मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया, साइको सोशल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया, 8 स्टेजेस में बांटा, उन्होंने भी इस बात को जोर दिया है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्यक्तित्व में जो कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप होते हैं अर्ली चाइल्डहुड में, अगर वो रिजॉल्व होता है तो आगे चल करके एक हेल्दी और बैलेंस पर्सनालिटी डेवलप होगा, और वो डेवलप्ड पर्सनालिटी देश के विकास में, इंडिविजुअल डेवलपमेंट के साथ सोसाइटल डेवलपमेंट में मदद करेगा। सो द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, foundational literacy and numeracy, an urgent necessary prerequisite for the learning. Curtailing dropout rates and ensuring universal access to education to all levels. जो ड्रॉप आउट्स है, बीच में बच्चे छोड़ के जा रहे हैं, और यूनिवर्सल एक्सेस हो एजुकेशन का सभी लेवल्स पे। करिकुलम और पेडागोजी जो स्कूल्स में है, लर्निंग शुड बी होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, इंजॉयबल एंड एंगेजिंग, सर्वांगीण होना चाहिए,
एकीकृत होना चाहिए, आनंदमयी होना चाहिए और बच्चे उसमें सहभागी हो सके, इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए। फोकस शुड बी ऑन टीचर्स, इंक्लूजन पर, एजुकेशन लर्निंग फॉर ऑल पर जोर देना चाहिए, efficient resource and effective governance through the school complexes and clusters। संकुल संसाधन केंद्र बनाया जाए जो रिसोर्स उपलब्ध कराए अपने आसपास के स्कूलों में, और एक स्टैंडर्ड जैसे नैक हायर एजुकेशन के लिए नैक जैसी संस्था है, उसी तरह स्टैंडर्ड सेटिंग एंड एक्रेडिटेशन फॉर स्कूल एजुकेशन, जिसमें स्कूलों को भी उनको रैंक दिया जाएगा उनकी गुणवत्ता के आधार पर, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके एकेडमिक अचीवमेंट, उनके जो टीचर्स हैं और बच्चों के योगदान को देखते हुए उनका एक्रेडिटेशन किया जाएगा, उनका मूल्यांकन किया जाएगा। अब रीस्ट्रक्चरिंग किया है पूरे स्कूल सिस्टम को, जो हमारा पहले का पैटर्न था, उस पैटर्न में 10+2 सिस्टम को रिप्लेस कर दिया गया है 5+3+3+4 में। 10+2 structure in school education will be modified with the new pedagogical and curricular restructuring, that is 5+3+3+4, covering ages from 3 to 18 years. Before it is 6 to 18 years. Now it become 3 to 18 years. Currently, children in the age group of 3 to 6 are not covered in 10+2 structure in class 1 begins at the age of 6. जो 3 to 6 years के बच्चे जिनको वहां कैटर नहीं किया जा रहा था, हमारी नई जो शिक्षा नीति आई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें इसको शामिल किया गया है और न्यू पैटर्न हो गया 5+3+4, और जिसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को बहुत अधिक फोकस किया जा रहा है। करिकुलम में इंटीग्रेट 21st सेंचुरी स्किल्स को किया जाएगा, मैथमेटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक सोच और गणितीय चिंतन की क्षमता बच्चों में बढ़े, इस पर जोर दिया गया है। सेपरेशन खत्म किया जाए, और एक बहुत ही इनोवेटिव कदम उठाया गया है कि हमारे टैलेंट्स और गिफ्टेड चाइल्ड जब सामान्य एजुकेशन में पढ़ते हैं तो उनकी मानसिक क्षमता ज्यादा होती है, उनके पास टैलेंट अधिक होता है और वो साधारण क्लासेस में अपने को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो उन बच्चों को उनके टैलेंट्स के अकॉर्डिंग उनको नर्चर करने के लिए, क्योंकि दे आर द एसेट्स ऑफ आवर सोसाइटी, so we have to utilize their mental capacity and capabilities for the further development of our society. So ऐसे बच्चों को, जो गिफ्टेड बच्चे हैं, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, उनके लिए इसमें प्रोविजन किया गया है, और इसमें जो जेंडर इंक्लूजन फंड भी जो है दिए जाने की बात की गई है। ECC के लिए नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन विल बी ड्राफ्टेड बाय NCERT। अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NCPFECE, NCERT के द्वारा ड्राफ्ट किया जाएगा। और जब इसे नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन बनाया जाएगा, तो इसमें जो उसे अलाइन किया जाएगा लेटेस्ट रिसर्च जो ECC के साथ किया गया है, और इंटरनेशनल जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको इसमें इंक्लूड करने की बात की गई है। और इसमें मल्टी फेसेट फ्रेमवर्क डेवलप किया जाएगा, और मल्टी फेसेट फ्रेमवर्क में उसमें अल्फाबेट्स, लैंग्वेज, नंबर्स, काउंटिंग, कलर्स, शेप, इंडोर एंड आउटडोर प्ले, पजल, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ड्राइंग, पेंटिंग,
और अदर विजुअल आर्ट्स, क्राफ्ट, ड्रामा एंड पपेट्री और म्यूजिक और मूवमेंट, इसको यूज किया जाएगा. मीन्स इट विल बी अ वेरी इनोवेटिव और इंगेजिंग. इट इज इलोबरेटिव. Curriculum will be framed that will be multi-faceted framework रहेगा. स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल डेवलप किया जाएगा. 3 month का प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल फॉर ऑल ग्रेड 1 स्टूडेंट टू बी डेवलप्ड बाय द NCERT. सो इसमें बहुत सारी ऐसी नई चीजें आ रही है जो कि बच्चों में डेवलप करेगा. फॉर्मेटिव ईयर्स जो होता है, अर्ली ईयर्स, दैट इज 3 to 6 years के लिए, जिससे बच्चों में डेवलपिंग क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा डेवलप हो सके. उसमें लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग, वो डेवलप हो सके. तार्किक चिंतन और समस्या समाधान की प्रवृत्ति बढ़ सके. आर्ट, क्राफ्ट और म्यूजिक को बढ़ावा मिले और उसको अलाइन करके वह सीखने में समर्थ हो सके. प्रकृति के साथ संबंध स्थापित करे. दे आर एबल टू डेवलप अ रिलेशनशिप विद द नेचर. दे आर एबल टू नो द कलर, शेप, साइज एंड नंबर्स. दे डेवलप द टीम स्पिरिट, दलगत भावना और कोलैबोरेशन, सहयोगात्मकता की ओर बढ़ सके. दैट इज वेरी नीड ऑफ दिस एज. प्ले बेस्ड एंड डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग हो. अन्वेषण करे, खोजपूर्ण अधिगम की ओर बढ़ सके बच्चे. बच्चों में इथिक्स डेवलप हो, सेल्फ आइडेंटिटी और मॉरलिटी और वैल्यूज डेवलप हो. दे आर एबल टू रिकॉग्नाइज देमसेल्व्स, देयर कैपेबिलिटीज. दे आर एबल टू फाइंड आउट देयर शॉर्टकमिंग्स एंड लिमिटेशंस, एंड दे कैन एबल टू लीड. दे एबल टू correct their limitations. They are able to change and strengthen their strengths. And EQT, behavior and emotional development, केवल IQ नहीं, EQ के ऊपर भी काम किया जाएगा, जिससे उसके व्यवहार में, उसके मैनर्स में, उसके भावनात्मक विकास में मदद मिल सके. अब 21st सेंचुरी स्किल्स, कौन कौन से स्किल्स है आप देखेंगे तो इसमें हमारे मुख्य रूप से 4 लर्निंग स्किल्स है जो अधिगम कौशल के रूप में जाना जाता है. बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग, बहुआयामी सोच को डेवलप करना. दे एबल टू सी द डिफरेंट साइड्स, डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ एनी फेनोमेना, एनी ऑब्जेक्ट. क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना. क्रिएटिविटी डेवलप हो बच्चों में, सृजनात्मकता, इनोवेशंस, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग. दे एबल टू डेवलप एनी ऑब्जेक्ट, आइडियाज दैट इज यूनिक, a new arrangement, new way of approaching the things. Creativity, collaboration, they able to develop the team spirit. Professor Yaspal, when I talked to him in a seminar, why we are not able to develop the many things, he told the audience, we are living in cube and cuboids. We don't want to mingle with others. If we go through the Japan, 1 means become 11. But here we pull each other's leg. We will have to develop the collaborative strategy. It will help each other. So collaboration, एक दूसरे को सहयोग करना, मदद करना, it is the need of the day. When chemistry will meet with physics, when physics will meet with Sanskrit, they can develop the research capacity or can develop the innovations. So don't live in cube and cuboids. We have to leave our personal grudges and pseudo personality frames we have made. If we want to make India vibrant, we have to collaborate and develop the communication skills. Communication skill is the pivotal by which you can able to express your views, ideas, share, and able to get the information from other sources or different sources. So we have to focus on the communication, development of communication skills. संप्रेषण कौशल को विकास करना होगा.
Our teaching learning depends upon 60% depends upon this communication skills. If you are an effective communicator, you can transmit many informations. Then life skill, flexibility, बच्चों में लचीलापन, adaptability, बदलते हुए परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की क्षमता, लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व की क्षमता, लीड करने की, इनिशिएटिव लेने की क्षमता, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडशिप, उद्यमिता का विकास हो, प्रोडक्टिव बढ़े और सोशल स्किल्स डेवलप हो, सामाजिक स्किल को विकसित किया जा सके. देन लिटरेसी स्किल, दैट इज लिटरेसी स्किल में लैंग्वेज एंड न्यूमरेसी previously we have learned, but 21st century we have to move towards the new things, that is information technology and media, because it is an essential part of our life nowadays. Without it we cannot move further. New education curriculum framework, ECE, for school, for teachers and adult education. National curriculum framework will be framed for these things. स्कूल के लिए, टीचर के लिए, एडल्ट एजुकेशन के लिए और अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए. बोर्ड एग्जाम्स के एम्फेसिस को कम किया जाएगा. SS3, 5, 8, 10 और 12 स्तर पर एग्जाम्स होंगे, बट बोर्ड एग्जाम्स विल बी लो स्टेक बेस्ड ऑन नॉलेज एप्लीकेशन. How to we will assess the child's capacity, whatever you taught, are they are able to apply in the real life situation or not. Medium of instruction till grade 5, preferably till grade 8 and beyond, in home language, mother tongue and regional languages. घर की भाषा, मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं में कम से कम 5वीं तक और आगे हम 8वीं तक उसको ले जाने की बात चल रही है. सो 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड ऑफ चाइल्ड, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण चीजों को रखा जाएगा, उनके फॉर्मेटिव, उसकी पोर्टफोलियो, उसके एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, उसके क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, उसके हेल्थ कार्ड, उनके अचीवमेंट्स, उन सारी चीजों को 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड में एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, वोकेशनल, प्रोफेशनल, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, उन सबको समाहित करके उस कार्ड में होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बनाया जाएगा. ट्रैकिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस बाय अचीविंग लर्निंग आउटकम्स, कि लर्निंग आउटकम्स जो एस्टैब्लिश करती है हमारी संस्थाएं, वो एनसीईआरटी हो या सीबीएसई, उस लर्निंग आउटकम्स के अकॉर्डिंग बच्चे अचीव कर रहे हैं कि नहीं, उसके लिए नेशनल असेसमेंट सेंटर परख का निर्माण किया जाएगा. परख का काम होगा कि उन बच्चों, जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, उनको एक्सेस करने के लिए इस तरह एक संस्था बनाई जाएगी जिसका नाम परख दिया गया है. NTA for offer common interest examination for admission in higher educational institutions. जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उनके लिए एक संस्था होगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो ऑफर करेगी एंट्रेंस टेस्ट. देन नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर, NPST, डेवलप किया जाएगा, जिसमें उनके प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के लिए क्या क्या प्रीरिक्विजिट है उसको एस्टैब्लिश किया जाएगा. देयर इज मोर emphasis on digital form of books, promotion of books and libraries, or more integration of digital inputs in this sphere. Transparent online self-disclosure for public oversight and accountability. जिम्मेदारी और पब्लिक के सामने में चीजें रहे, उसके लिए क्या किया जाएगा कि ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर की व्यवस्था की गई है. अब देखिए कि ट्रांसफॉर्मिंग करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर में न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर और एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर क्या है. पहले हम 6 तक के बच्चों को कोई हमारे पास फ्रेम नहीं था,
अब न्यू में 3 इयर्स तक जो बच्चे होंगे 3, 2, 5, इसमें बच्चों को फाउंडेशनल स्टेज कहा गया 5 तक का। मल्टी लेवल प्ले और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, बहुस्तरीय खेल आधारित और गतिविधि आधारित लर्निंग करवाई जाएगी। और यह फाउंडेशनल स्किल्स डेवलप किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा? आंगनवाड़ी केंद्र के द्वारा, प्री स्कूल्स और बाल वाटिकास के द्वारा। और इसकी एज ग्रुप होगी 3 to 6 इयर्स। इसमें हमारा 3 इयर्स यहां रहेगा और 2 इयर्स क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होगी, और वो एज होगा 6 to 8 इयर्स। तो ये जो हमारा लगभग 5 साल का टाइम होगा, ये जाएगा ECCE के तहत। देन प्रिपरेटरी क्लास होगी। प्रिपरेटरी क्लास में खेल, अन्वेषण, गतिविधि और इंटरेक्टिव संवाद आधारित कक्षाएं आयोजित की जाएगी 3 इयर्स के लिए, और ये क्लासेस होगी 3 to 5 इयर्स। एज ग्रुप होगा 8 to 11 इयर्स के बच्चों के लिए होगा प्रिपरेटरी, जिसमें क्लास 3, 4 and 5 की पढ़ाई होगी 3 इयर्स में। देन मिडिल स्टेज, थर्ड स्टेज, इसमें अनुभवजन्य अधिगम, एक्सपेरियंशियल लर्निंग इन द साइंसेज, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज में प्रोवाइड की जाएगी। और ये एज ग्रुप होगा 11 to 14 इयर्स का एज, 3 इयर्स, इसमें 6 क्लास, 7 और 8 क्लास की पढ़ाई होगी 3 इयर्स मिडिल एज। देन सेकेंडरी स्टेज में मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, ग्रेट क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चों में आलोचनात्मक, लचीलापन, और स्टूडेंट के चॉइस के अकॉर्डिंग उनको सब्जेक्ट ऑफर किया जाएगा। और इनकी एज होगी 14 to 18 इयर्स, 4 इयर्स का ये कोर्स होगा, और क्लास 9, 10, 11 और 12 न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर में आएगा। So new pedagogical or curricular structure of school education become 5 plus 3 plus 3 plus 4. 5 is the foundational, 3 is preparatory, 3 is for middle, and 4 is for secondary. 3 years in Anganwadi, preschools, and 12 years in the school. The existing 10 plus 2 structure become changed. What are the experiential learning included in the all stages? Hands-on learning, करके सीखना, arts integrated, कला से integrate, sport integrated education, storytelling based pedagogy, among others as standard pedagogy. Now, focus will shift from rote memorization or learning for the exams shift towards the competency based learning and education. Content will focus on idea, application, and problem solving. So content should be developed the key concepts, ideas, applications, and problem solving. संप्रत्ययों का विकास, नए विचार, उनके अनुप्रयोग और समस्या समाधान पर जोर दिया जाएगा। And it will be the as said by the Adams, the learning should be a two-way process. So traditional methods of teaching should be abandoned, and new methods or innovative methods where they participate more involvement of students. It will be the norm of new education policy. No hard separation of streams for students. We have discussed about it. Now the student will give an increased flexibility and choice of subject of study, particularly in secondary schools, including subject in physical education, the art and the craft, and vocational skills. There will be no hard separation among curricular, extracurricular, curricular among arts and humanities and science, between vocational and academic. Means a student can opt different subject combinations. There will be a free choice at the secondary level. Nutrition and health cards and regular health checkups for the school students. The nutrition and health, including mental health of children, will be addressed through the healthy meals and regular health checkups, and health cards will be issued to monitor the students. So it is a very
innovative things that is coming on in the area of education for the overall development of students. There is more focus on experiential learning, integrated pedagogy, equal weightage for curricular and co-curricular and extracurricular areas, freedom of choosing class, bagless days should be encouraged, use of integration of technology, promotion of peer tutoring, integrated pedagogy, and experiential learning. 3 languages learned by the children will be choice of the state and regions and students. जो हमारी त्रिभाषीय व्यवस्था थी उसमें अब ये रीजन फ्रीडम दिया गया कि स्टेट या वो क्षेत्र या बच्चा स्वयं एटलीस्ट 2 और 3 लैंग्वेज जो नेटिव लैंग्वेज है इंडिया के उसमें से वो सीख सकते हैं, उसकी चॉइसेस पर इसे छोड़ दिया गया है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होगा ग्रेड 5 तक लोकल लैंग्वेज में होगा। बैगलेस डेज बढ़ाई जाएगी जिसमें बच्चों को इनरिचमेंट एक्टिविटीज दी जाएगी, उनको जो लोकल क्राफ्ट्समैन है उनके साथ जोड़ा जाएगा, आर्ट्स, क्विज, स्पोर्ट्स और वोकेशनल क्राफ्ट्स आदि के साथ उस बैगलेस डेज में वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग को करेंगे। करिकुलम के कंटेंट को क्या करना है, उसको रिड्यूस करना है, उसको रिड्यूस करके इनोवेटिव बनाना है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल्स ऑफर कोर्स करेगा, 3, 5 और 8 लेवल्स पे भी वोकेशनल कोर्सेज ऑफर करेगी। NOS and state open school also offer A, B and C level that are equivalent to grade 3, 5 and 8 of the formal school system. Secondary education program that are equivalent to grades 10 and 12 and vocational education courses programs for adult literacy and life enrichment programs will be developed by NIOS. There are various provisions for children with the disabilities. Children with disabilities will be enabled to fully participate in regular schooling process from the foundational stage to higher education. With support of educators with cross disability training, resource center, accommodations, assistive devices, appropriate technology based tools and other support mechanisms tailored to suit their needs will be developed. On Shikshak Parva, our Honorable Prime Minister yesterday dedicated some devices for blind and deaf and dumb, for the Divyang students. So now such devices according to the need of CWSN will be developed through the research by collaborating with the international players and developers or local developers to cater the need of CWSN child. Every state and district will be encouraged to establish Bal Bhavans as a special daytime boarding schools to participate art-related, career-related, and play-related activities. Free school infrastructure can be used to Samajik Chetna Kendra, the school premises where when there is no schools that can work as a Samajik Chetna Kendra for participation of community and further generation of knowledge. Now, National Curriculum Pedagogical Framework to be developed by NCERT. We discussed about it earlier also. A National Curricular and Pedagogical Framework for Early Childhood Care and Education for children up to the age of 8, from age 3 to 8, will be developed by NCERT. Coding will be taught from the class 6 onwards, and vocational education also will start from 6 to 8. Students for class 6 onwards will be taught coding schools as part of 21st century skill, technological information, media and technology, e-content in regional languages. Right now,
NCERT's ICT division developed National Repository of Open Educational Resources, where you can find different languages, content or textbooks materials. Now, Diksha platform also working in this direction. Importance of board exams to be reduced. Exams can be conducted twice a year, and it will be mix of objective as well as descriptive materials. Exams can be conducted twice a year. Promote knowledge application, focus on that. 360-degree holistic report card for the students. Preparatory class of Bal Vatika for children below the age of 5. Prior to age 5, उसमें preparatory class होगी बाल वाटिका, और before class 1 which has ECCE qualified teachers उनके लिए hire किए जाएंगे. अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन करिकुलम जो है वो MHRD, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा ज्वाइंटली इसको कंडक्ट किया जाएगा. इट इज ऑल अबाउट द स्कूल एजुकेशन सिस्टम. वी विल डिस्कस व्हाट आर द प्रोविजंस फॉर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस, यूनिवर्सिटीज on next class, in the next presentation. Till now, if it is useful for you and for knowledge development, please subscribe my channel. Please click on bell icon, and in the near future we will come with the new things related to education, education psychology, sociology of education, philosophy of education, as per your demand. Thank you for watching this program. Thank you.